Hi, good evening. Is this clear? Light ज़्यादा है. Light? No, there's something else. Something wrong with the screen. Okay. So, hi everyone. Happy Valentine's Day, although I don't believe in it. Bullshit. It's just a way to market and make money. But yes, a lot of people feel that they need to celebrate Valentine's just because the others are celebrating. Everybody else is celebrating. Not clear at all. Well, bad luck. So, I know a lot of people will have a lot of questions about their love life. And unfortunately, I have my entire box of my tarot cards here, and I was going to do free tarot for y'all. Arnav Samadar. Hi. Amen. Amen to what? Okay. So I was going to do free tarot for y'all, and I remembered that tomorrow is full moon. 15th of February is full moon. And hi, Sanika. Happy Valentine's. I am okay. This is hanging. And so I decided that, okay, since we can't do tarot, let's do oracle cards. So let's do one oracle card for each of you. Hi, Ganesh. In case you have questions on uh, your love life, and only questions on relationships and love. It doesn't necessarily mean that it has to be your spouse, your girlfriend, boyfriend, wife, husband. It could be a relationship with anyone. There is something wrong with the network, I think. um Ishwarji, namaskar. Hi, Khushbu. Happy Valentine's to you. Hi, Shanti. Yes, love is to be celebrated every day. That's wonderful. And it doesn't mean that love with only one person has to be celebrated. I'm so not comfortable with this haze. Let me just put on some more light and I'll be back in a jiffy. This is better. Okay. So, any Valentine's Day message? Okay, sure. So, message from anyone in particular or general message? Uh, what deck would you like to use? Okay, let me show you the decks and you decide which deck do you want. One, two, Romance Angel 3, Angel Answers. Okay, so these are the three. I have more decks here, but Sanika, since you asked, you wanted a message, what deck would you select? I am not on StreamYard, so I cannot send you a link to join me today. I should have actually. Ouch. 4 proposals coming your way. Oh, wow. No particular person. Okay. Hi, Kanath. Okay, I do. Do I have a twin flame? Okay, I'll take it up, Ganesh. Just hold on. Let me take Sanika's questions for proposals coming your way. So, do you have proposals coming your way? Green. So, this one. Okay. So, the love oracle. The most difficult deck to shuffle. Sehaj. Happy Valentine's Day. Sehaj. I'm sorry, I'm unable to pronounce your name properly. Excuse me if I didn't pronounce it right. Okay, so Sanika, let's see what is the message for you. Yes. And it says you are trying too hard. Give it time. So if you are single and if you're looking for a companion, a partner, a lover in life, then you're trying too hard. Stop trying too hard. Just let it go. In fact, stop thinking about it.
Absolutely stop thinking about it. And the day you stop thinking about it, maybe he'll just reappear from nowhere. So I think you should. So give it time. Always trust in divine timing. Maybe it's not the real right time for you right now. And Ganesh asked, do I have a twin flame and will we meet? Those are two questions, Ganesh. Cheating. Okay. Do I have a twin flame? So it's not about do you have a twin flame? Will you meet them? This is not tarot, Ganesh. Understand, this is oracle. So I'll just ask your question and let's see what comes up. So about Ganesh and his twin flame. Why is everybody after twin flames? Because this year is about twin flame. Okay. Uh, oh, oh, I was going to pull out more cards, but it just stopped at this. So you don't have a twin flame. No, I don't think I need to pull another card. When will your boyfriend come back to you, nature lover? Hi, why do you even want such a boyfriend who will leave you and go? Such boyfriends who leave you and go, you need to kick their ass and just let them be where they are. Uh, yes, I remember you. Okay. How I came to know I have any twin flame. How I came to know? So you want to know if you have a twin flame. Okay, everybody wants to ask the same thing. Uh, Communicate clearly. You know, that question was not clear. And the card says communicate clearly. So, yes, I understand that. How will you come to know if you have a twin flame? Sehaj, you have to communicate not to me, but to the universe. You have to communicate to the universe to send you your twin flame if there is one. So, I guess that is what the angels are trying to tell you. Yes, Sanika, you need to wait for divine timing. I'm sorry. Amar, Amav, I want foreign girl. फॉरेन गर्ल क्यों? गोरी चमड़ी ज्यादा पसंद है, हिंदुस्तानी नहीं पसंद? पैदा तो आप हिंदुस्तान में हुए हो, फॉरेन गर्ल क्यों चाहिए? अच्छा, अफ्रीका की चाहिए? सॉरी, जस्ट किडिंग. फॉरेन गर्ल मतलब यू वांट फॉरेन गर्ल, बट वो मिलेगी या नहीं, सवाल तो वो है ना. मतलब कहीं आपने कह दिया यूनिवर्स को मुझे फॉरेन गर्ल चाहिए, यूनिवर्स ने कोई अफ्रीकन भेज दी, क्या करोगे? उससे तो हिंदुस्तानी अच्छी है. आई वाज ओके. ये आपस की बात चल रही है इनकी. फॉरगेट अबाउट ट्विन फ्लेम. डू आई इवन हैव अ पार्टनर ऑन दिस प्लैनेट इन दिस लाइफ? ज्योत्सना. क्या बोलूं? He's saying I want a foreign girl. Oracle means what? So, acha. Okay. See, these are my tarot cards. You get a lot of answers in these cards. Yes, no, क्या होगा, कैसा, कैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत सारे सवाल इससे मिल जाते हैं, लेकिन आमतौर पे फुल मून पे, न्यू मून एंड फुल मून से एक दो दिन आगे पीछे मैं टैरो नहीं करती, और मैं भूल ही गई थी. मैं सोचा टैरो करूंगी और मैंने लाइव अनाउंस कर दिया. कोई बात नहीं, मैं 2 दिन बाद दोबारा लाइव आने वाली हूँ. वैसे भी आए वो 5 planets in Capricorn is pending, so that reading I have to do for all the sun signs. So anyways, first I thought I'd do that, but then since it was Valentine, so I thought, okay, let me try and help people with a reading. But eventually then it's all right, we can always do oracle. So oracle means angel cards, or cards that don't give you those kinds of definite answers. They're not predictive. हिंदी में बोलना चाहिए था. इनसे ये नहीं पता चलता कि आगे क्या होने वाला है. टैरो से पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है. अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, अगले महीने में क्या होने वाला है, अगले साल में क्या होने वाला है. बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. कोई अगर कहीं पर है तो वो खुश है या नहीं है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, बच्चा है, पति है, माँ बाप है,
या बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं कि नहीं, क्यों हुए, ब्ला ब्ला, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। ओरेकल कार्ड्स जो होते हैं, ओरेकल कार्ड्स से आपको सिर्फ गाइडेंस मिलता है, आपको प्रिडिक्टिव आंसर्स नहीं मिलते, मतलब क्या होने वाला है ये नहीं पता चलता। आप अगर कुछ चाहते हो तो उसे कैसे पाना है वो पता चलता है। तो I will try to foreign for you will try to go to foreign for PhD degree. Okay. Good. South America. Oh, you're going to South America for your wow. Then you should get a probably a Brazilian wife or yes, you can know about previous birth. Ma'am, what is a message from me from the divine? What deck, nature lover, would you like to use? 1, 2, and 3. Abhinav Popli, hi. You can know about previous birth through your date of birth, numerology. You can know about your previous birth from through hypnotherapy, and you can also know about your next birth. But generally, those kinds of hypnotherapy, there are very few people who do. You mean to say this one, Nature Lover? Okay, this is the violet deck, the romance angel. Okay. क्या जानना है प्रीवियस बर्थ के बारे में, बता दो, मैं बता दूंगी, पता है मुझे. Can you please tell about me? I had a terrible problem since last 3 years. I was in France for my education. My name is not Arnav. Arnav है या अमाव है? I am Rahul from Nagpur. I did masters in physics. So what exactly is it, Arnav, Rahul, that you want to know? And nature lover, what was your question, or what are the message for me from the divine? Okay. So, nature lover, do you have somebody in your life? Please say yes or no. Do you have somebody in your life? Because, or are you seeing someone or plan to see someone? Because the card says that you, one sec, Anjum, let me answer nature lover and then I'll take up your question. You need to get to know each other. You don't. So, if there is somebody around, if there is somebody around that you are interested in, then you two need to get to know each other. And when the bond deepens, that is when the relationship would be a success. Remember, I'm only doing readings for relationships and love. Good evening, Sanat. So, obviously, when it says this, that means there is somebody around that you have not probably paid attention to. I don't even know if you're a boy or a girl, but somebody definitely is there around you. Okay. I'm not so aware previous birth, and then in this one, I was told astrology wise, lots of moolah after 42. Guess tarot has different version. Uh, Tarot taps into the subconscious mind and the energy of the person. Numerology or astrology will tell you according to based on calculations what you can see. But now, in fact, I think whoever did your reading, I don't think so. I think it's a lot of hard work coming your way in the near future. So, but today I'm not. I'm doing tarot, and this is not about
money or other things. It's about relationships. So if you have a question about that, maybe, or about your past life, maybe we can do it next time. I wanted to know if I will get married this year. Sanat. Married? Okay. Um, this is not tarot, Sanat. So, hi, Savi. Hi, Savi, and thank you. This is not tarot, but about your marriage. What is the message from the divine? I can ask that. Ah, okay. So, if you are to get married this year, then there are certain compromises that you will have to make. I don't know. Are you a man or are you a boy or a girl? So if you're a girl, then maybe you will not get the kind of guy that you're looking for. And there may be certain compromises that you may need to make. So it is possible if you're willing to compromise. I don't think you should. Truth wins. Can you please tell how is your twin flames health right now? My dear, I'm not doing tarot, so I cannot give you a message about their health. But what I can do is I can pick some Archangel Michael card and ask them for guidance, and that will kind of give us an idea of what is going on with your twin flame. So, Archangel Michael, what can you please tell me her or his name? I'm a boy. Okay. So, Truth Wins, can you please tell me, is it all right with you to say the name of your twin flame? Yes. What is it? Twin Flames Health, can you please tell me their name? Okay. Or your name at least? All right. Archangel Michael, can we have some guidance about Truth Wins Twin Flames Health? Uh, Priyanka. Okay. He's a guy. All right. Your name is Priyanka. All right. Priyanka, this says, just a sec. Sharmila, exhaust laga de. Exhaust. पंखा लगा उधर. Exhaust. I'm so sorry. वो खाना बना रही है और सब धुआं मेरे मुंह में जा रहा है. Excuse me for that. Okay. So, Priyanka, Archangel Michael says, forgive yourself. You've done nothing wrong. Now, this card is for your twin flame. So, your twin flame is going through a guilt trip. I ask, and this is the prayer that you could say for your twin flame, or your twin flame has to say. I ask that you help me let go of self blame and forgive myself. Please guide me in releasing any toxic anger or fear towards others. Thank you, Archangel Michael, for allowing me to feel centered and at peace. Your twin flame is very disturbed at the moment, very imbalanced energies, and going through a lot of guilt, regret, feelings. So, emotionally, your twin flame is not in a good space. And you can always ask Archangel Michael to protect him, and maybe you can reach out to him and see that he is doing better. All right. I'm in 50s and married to and fairly okay. But in college, one guy had feelings for me. I could never understand his true feelings. His name was Sanjay. Did he do time? uh, That's such a sweet question.
कॉलेज का पहला प्यार. You're welcome, Sanat. So this is not tarot, but in this deck there are some yes no cards. So I can try and ask. Let's see what the cards have to say. Rahul, I'm doing only one question per person. So I've already done for you. About Sanjay Savvy. No, he was not doing time pass. Oh my God, he really loved you. Very rarely do you get men who love you. How sweet that is. पूजा ठाकुर, क्या मेरे हस्बैंड कभी भी अपनी फीलिंग्स मेरे सामने एक्सप्रेस करेंगे? ही ऑलवेज सीम्स लाइक अ क्लोज बुक इवन आफ्टर 15 years of marriage. आफ्टर आफ्टर 15 years of marriage कोई हस्बैंड एक्सप्रेस नहीं करता. उस शादी के 3 साल बाद भी अगर एक्सप्रेस कर देना तो बहुत बड़ी चीज है. पूछ लेते हैं, will he ever express? You need to make him express. You need to manipulate him into expressing. That's what you need to do, especially after 15 years of marriage. Ask for help from others. So what you need to do is you need to probably speak to your husband's friends or your friends if he is close to any of them, some male, female. You could even I mean, if you have children, you could even ask help from your kids. And maybe if somebody else asks him about it and they record the conversation, maybe that way you would know if he loves you or not, or he'll express. You're welcome, Truth Wins. When will I meet my soulmate, Angel Brishti? Sure. When will you? Angel, these are, I'm not doing tarot. This is, okay, I'll use the romance angel. This is oracle cards and angel cards. पता नहीं क्या तड़का लगा रही है. मेरा नाक गला सब गया. Okay. About you meeting your soulmate. ना कितना भी पैसा हो किसी के पास, कितना भी कुछ भी हो जाए, सोलमेट हर एक को चाहिए. चाहे वो झोपड़ी में रहता हो या अंबानी के महल में रहता हो, हर एक को चाहिए. फिर भी लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? बाहरी सुंदरता के पीछे क्यों भागते हैं? प्यार के पीछे क्यों नहीं भागते यार? ये पिछले 50 सालों में जिंदगी, 100 सालों में नहीं, 50-60 सालों में बहुत बदल के रह गई है. Okay, so it seems that there is somebody, angel, around you, angel Prishti. There is कोई है तुम्हारे आसपास जिसके बारे में शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है, because your cards say this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So maybe तुम्हारे कोई दोस्त या तुम्हारे आसपास कोई ग्रुप में कोई है जो है तुम्हारा सोलमेट. उनके साथ you have to be playful. हंसी मजाक फ्लर्ट करना है. टू recapture romance, allow your inner youthful spirit to of fun to shine. मैं एक कार्ड निकाल रही थी लेकिन 2 कार्ड्स खुद ब खुद निकल गए. तो that was your guidance angel. So कब मिलोगे? नहीं, कोई आने नहीं वाला, ऑलरेडी है तुम्हारी जिंदगी में, उसे पहचानो. ईश्वर जी, कोई मेरी किस्मत में भी है क्या? ईश्वर जी, इस उम्र में क्या करोगे? मतलब मुझे पता नहीं आपकी शादी हुई नहीं हुई, आपके बच्चे हैं कि नहीं है, आपकी बीवी है कि नहीं है. मजाक अच्छा कर लेते हो आप. आपकी किस्मत में आप ना अभी थोड़ा सा ना मोदी जी पे ध्यान दो, और वो कौन है, वो केजरीवाल पे ध्यान दो, वो बेहतर रहेगा. क्योंकि प्यार के पीछे तो सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन इन लोगों की खिंचाई करने वाला कोई नहीं है. वो आप करते हो, तो आप ना जरा उन पे ध्यान दो. गुड सनिका. Why should you feel like teens only once in a while? You should always keep your inner child alive.
keep your inner child alive all the time. You should. There's no harm in flirting. Harmless flirting is always good. Having fun is always good. I mean, मैं तो अभी कई बार सड़क पे बीच पे उछलती कूदती जाती हूँ. अब 55 में अगर मैं ये कर सकती हूँ, मन करता है तो करती हूँ. आई डोंट केयर कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है मेरी बला से. तो आप लोग तो शायद मेरे से बहुत छोटे हो सब. You're welcome, Savvy. सनिका. अच्छा, आई मिस्ड लॉट ऑफ. ओ बाप रे, देयर आर सो मेनी. और मैं अटक गई यहाँ पर. व्हाट इज द टॉपिक टुडे? आई हाय. Yes, I think Ishwarji is married. Are you? Yes, Madhu, I'm doing this reading for all. Cooking. Okay. मेथी आलू मूंग की दाल, लहसुन प्याज और टमाटर डाल के. So, happy Valentine's, Jay Lakshmi. हाँ, देनी पड़ती है. अगर सामने वाला बेवकूफ हो, गधा हो, तो बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है. You're welcome, पूजा. ट्राई कर चुकी हो. ओके. क्या है ना कि अगर किसी को प्यार की कीमत नहीं पता, तो दैट्स देयर लॉस. सो आई वुडंट कॉल इट कुर्बानी. I would call it having patience. I would call it trying hard. I would. बहुत सारी चीजें हैं मिलजुल के. बट एक्चुअली नुकसान सामने वाले का है अगर वो प्यार की कीमत नहीं कर सकता, प्यार की इज्जत नहीं कर सकता, और इधर उधर मुंह मारता फिरे, कहीं और चला जाए. ठीक है, सबकी किस्मत में सुख नहीं होता. मधु, प्यार मिलता भी है इवन इफ वन क्रेव्स फॉर जस्ट लव. किस्मत है, कुछ लोगों को नहीं मिलता. पर प्यार सिर्फ वो प्यार नहीं होता. सी मधु, लिसन, अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला कभी, लेकिन आप सब लोगों का तो भरपूर प्यार मिल रहा है ना, और मेरे घर वालों का मिल रहा है ना. तो प्यार सिर्फ एक ही इंसान का मिलना चाहिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है. प्यार करो भी सबको और मिलना भी सबसे चाहिए. लर्न टू वैल्यू इट. और कोई करे ना करे, खुद से प्यार करो. सीख लिया मैंने खुद से प्यार करना. मैं सीख सकती हूँ तो आप लोग भी सीख सकते हो. करो, खुश रहो, खुश रहना सीखो. प्यार आते जाते रहते हैं आजकल की जिंदगी में. What is the topic today, Jay Lakshmi? Today is Valentine's Day. So I decided to do a free oracle card for everyone. A question on love and relationships. Now, that relationships could be your friend, your lover, your husband, your parents, and like Savi asked, her first love in college. So, कुछ भी हो सकता है. Akanksha Chaturvedi, hi. You're welcome, Angel. Mandy Singh, will my daughter get into a relationship soon? Okay, we'll ask. Will she get into a relationship soon, or is it right for her? So what I will do is I will just ask for guidance for your daughter. And let's see what the cards have to say. Please tell. Arnav, Rahul, I have already answered one question. I'm doing only one question per person, okay? Let others have a chance. वही तो कर रहे हैं. It says ask your angels. So maybe you have higher masters or you have angels around you who are trying to send you guidance and messages, but you're not paying attention. So ask your angels to send you messages. You know how the messages are sent, right? If you've been following my channel. So they will send it to you. नरेश कुमार, कृपया हिंदी में बताओ. अरे हाँ, सॉरी, मैं बार बार भूल जाती हूँ. मैं अब हिंदी में बताऊंगी.
संपूर्ण हिंदी, बिल्कुल. Yes, Kenneth. Ishwarji killed it today. What about me? Do I have anyone, Kenneth? Do you really want someone? Okay. Do you have anyone? Okay. So, guidance for Kenneth's love life. Shall I ask that? The situation will improve. So, the guidance for you, Kenneth, is that the situation will improve. Now, this situation could be, about what? And maybe after that situation improves, maybe somebody will come into your life. So, this is what I think. Am I right? Yes, if you believe. So, if you believe that somebody will come into your life and you need someone, then yes, somebody will come. Akanksha, I'm in a mess when it comes to love for a couple of years. Tell me somebody who's not in a mess. I need some stability and a good person to settle with. Good is a very relative term. Looking for a real and true connection. अरे बाप रे, भगवान मांग लेती तो मिल जाता यार. Good person with a real and true connection. बहुत मुश्किल है इस कलयुग में मिलना. Okay, I'm sorry. Just kidding. So, you want, but what is your question? Tell me your question, Akanksha. My inner child is always alive. Instead, now I'm told to be matured. Maturity में कुछ नहीं रखा, बुढ़ापा है मेरा. बेवकूफी है, मैच्योर बनने की कोशिश भी मत करना. मैच्योरिटी ना यहां होनी चाहिए. अपने चाइल्ड को मैच्योरिटी से हैंडल करना, मतलब कि जिम्मेदारी से हैंडल करना, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं. आप बच्चे की तरह कुछ भी नहीं कर सकते. आप करो आपके जो मन में आए, लेकिन उसके आउटकम एंड रिजल्ट्स के लिए यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर अवेयर ऑफ व्हाट द आउटकम कैन बी. दैट इज मैच्योरिटी. मुझे भी बोलते हैं मेरे बच्चे, इट्स ऑल राइट. मेरा बेटा तो मुझे एवरी सेकंड डे बोलता है, मम्मी तू बड़ी कब होगी. इट्स ओके. Hi, ma'am. It's been 7 years. I got married, and my husband is totally different as compared to me. Who is not? The husband is supposed to be totally different. Our opposites attract, yin and yang. It's always the opposite. But I don't feel so connected with him. It's my arranged marriage. Why I'm feeling such things? Okay. Now, this is a very serious question. Jyoti, क्या है ना, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी रिलेशनशिप में यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, यू नीड टू मेक एन एफर्ट. अगर आप कोशिश करोगे, आप प्यार करोगे, तो शायद आपको सामने से प्यार मिले. आपने ये तो कह दिया कि कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन दोनों तरफ से नहीं है ना. तो एक तरफ से तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, दूसरी तरफ से तब जाके कोई रिस्पॉन्स मिलेगा. और तब भी नहीं मिलता तो पता करो कि इस रिश्ते में कमी क्या है, कहाँ है, और उसे सुधारो. अब शादी तो कर ली, 7 साल हो गए. अगर यू कीप लिविंग ऑन दैट थिंग के अरेंज मैरिज है, लव नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कैसे चलेगा, तो फिर जिंदगी, आई मीन, मेन विल स्टार्ट स्ट्रेइंग. पति भी तंग आके इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देगा, या कल उठ के डिवोर्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो हालात क्यों पैदा करने. उससे बेहतर है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो. वो करता है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन दिल से प्यार करना पड़ेगा. मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई, आई वॉज इन लव विद अ गाय एंड ही गॉट मैरिड टू समबडी एल्स. और मैं तो कहती थी मैंने शादी ही नहीं करनी. तो मेरी माँ ने पिट मार के, मतलब मेरी जान खा ली के शादी कर, शादी कर, शादी कर. फाइनली आई सेड ओके. मतलब मम्मी कहती थी कि अब तो उसने भी कर ली, अब तो कर ले. मैं कहा ओके. मैं शादी कर ली. मेरी भी अरेंज मैरिज थी, मुझसे 6-7 साल बड़े हैं ये. तो ऑब्वियसली कोई कनेक्शन तो था नहीं. एंड ही वाज
आई मीन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी में। लेकिन जब शादी कर ली तो मैंने कहा अब तो शादी कर ली, अब बच्चे भी होने हैं, जीना भी यही है, मरना भी यही है, तो कोशिश तो करें। 1.5 साल, एक डेढ़ 1.5-2 साल के बाद ये हालात थे दैट आई वॉज मैडली इन लव विथ माई हस्बैंड, मैडली इन लव। ये मेरे हस्बैंड ने अपने मुंह से बोला है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इससे ज्यादा कोई मुझे दुनिया में प्यार नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, आगे मेरी किस्मत के आगे क्या हुआ कैसे हुआ वो सब बात की बातें हैं। लेकिन जब मैंने प्यार दिया तो सामने से मुझे भी प्यार मिला ना, कुछ हद तक, भले वो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए मिला या जैसे भी मिला। दूसरी बात ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक की प्यार की परिभाषा अलग होती है। मैं मेरे लिए प्यार की परिभाषा कुछ और हो सकती है, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ और हो सकती है। किसी के लिए होता है कि महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए, मैं तो बहुत मतलब मैंने प्यार जता दिया। किसी के लिए होता है कि मैंने सेवा कर दी, मतलब मैंने प्यार जता दिया। किस अलग अलग होता है, हर इंसान की सोच उनकी परवरिश के ऊपर निर्भर है। तो उनका नेचर, उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर वैसा होता है और उनकी प्यार की चाहत भी वैसी होती है। जिस चीज की तुम्हारी जिंदगी में कमी होगी ना, तुम अगर प्यार ढूंढोगे तो तुम उस तरह का प्यार ढूंढोगे कि अगर तुम्हें कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिए तो तुम चाहोगे कि कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें मतलब बहुत सारे गिफ्ट दे तुम्हें। like my husband used to shower me with things, expensive things, branded things, and I used to, मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, नहीं चाहिए यार पैसा, नहीं चाहिए ये सब सोना हीरे जवाहरात, आई डोंट केयर फॉर ऑल दैट। सो हर एक की, ये मुझे तब नहीं पता था कि हर एक की प्यार की परिभाषा अलग है। ये तो अब जाके मैं समझी हूं ना इन बातों को। तो इसलिए अगर तुम अपनी शादी बचाना चाहती हो तो अपने पति की प्यार की परिभाषा को समझो, तब जाके तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। थोड़ी सी प्यार करने की कोशिश करो, अपने तरीके से करो, जो तुम्हारे लिए प्यार की परिभाषा है वैसे करो, और उनकी परिभाषा को समझो, उनसे उनकी भाषा में प्यार करो। दिस इज व्हाट मैरिज इज ऑल अबाउट, और एनी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। मैंने नहीं सोचा था आज भी लेक्चर देना पड़ेगा। Okay. I believe in unconditional love. Yes, we all believe in unconditional love, but the problem is that none of us are actually willing to give unconditional love. चाहते सब हैं, देते कितने लोग हैं? अनकंडीशनल लव का मतलब होता है नो जजमेंट्स। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि तुम्हारा पति है या लवर है, जो भी है, वो 10 जगह भी मुंह मार के आ जाए ना, तब भी तुम उससे प्यार करो और उसे माफ कर दो, और एक दूसरे से खुल के अपनी दिल की बात कह पाओ, उसको इंटीमेसी कहते हैं। अगर तुम डरते हो कहने कहने मतलब इफ यू आर स्कैर्ड टू से कि मैंने ये किया, जो आपको पता है कि सामने आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर काहे की इंटीमेसी हुई? फिर वो इंटीमेसी नहीं है, फिर वो प्यार नहीं है, फिर वो एक ट्रांजैक्शन है, एक तिजारत है। ओके, यस जया, सुशांत इज लव हिमसेल्फ, बट क्या उसको जिंदगी में प्यार मिला? ओके, कुड यू प्लीज नो आई लेफ्ट योर, तो आप ना ये वीडियो में सेव करूंगी ना, वापस जाके देख लेना। मैम प्लीज रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, इट्स आई डिड रिप्लाई। अच्छा, ये नीचे के पढ़ रही हूँ मैं कमेंट्स। मैरी योर लाइक माइंडेड पर्सन। सनिका, शादी छोड़ देना ऐसे मतलब इज इट दैट इजी? इट्स नॉट दैट इजी सनिका। She can always come to me for a relationship analysis, get a relationship analysis or counseling,
and then decide if you should really leave him. जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करना. Why am I meeting people who misunderstand me often and it is becoming a mess? Okay, we'll ask why. तुम लोग टैरो के क्वेश्चंस पूछ रहे हो. Why are you meeting people who misunderstand you? What comes to me is, first of all, let go of that feeling, that pain that people misunderstand me. Secondly, most important is, do you understand yourself? Thirdly, are you able to explain to them? People misunderstand you. See, there are certain numbers in your chart uh, which create these circumstances, because you're not meant to probably be around those people, or there are learnings for you to have patience. That could be one of the learnings, that you're supposed to be patient with these people. You're supposed to change your behavior so that they can understand you. जैसे मैंने प्यार के लिए बोला कि सबका अपना तरीका होता है, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता, वो हर एक के लिए होता है, सबके साथ होता है. तो अगर आपके आसपास आपके लोग हैं जो आपको नहीं समझ पाते, तो या तो स्टॉप बॉदरिंग अबाउट इट, स्टॉप वांटिंग दैट समबडी शुड अंडरस्टैंड यू. पहले खुद को समझो. कोई आपको समझे या ना समझे वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप खुद को समझते हो और आपकी नजरों में आप सही हो, बहुत है. इट्स मोर देन इनफ. स्टॉप. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दुनिया की और जिंदगी की? वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, वो मुझे गलत समझ रहे. अरे समझ रहे तो समझने दो. तुम तो जानते हो ना कि तुम सही हो, बहुत है. योर कॉन्शियंस नीड्स टू बी क्लियर. दैट इज मोर देन इनफ. I feel some connection with you and I feel like our vibration also matches somewhere. कभी कभी आपसे खूब सारी चैटिंग करने का मन करता है. आप परमिशन दे दो तो आपको. नहीं, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना, मैं जब भी डॉक्टर विलास जगदाले के साथ वीडियो करती हूँ, बाप रे, उसके बाद इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, और कितने सब्जेक्ट्स को लेके आते हैं. मैंने ऑनेस्टली बहुत इतने सारे ग्रुप्स में मुझे ऐड किया हुआ है, मैंने देखना छोड़ दिया है. तंग आ गई हूं मैं थक जाती हूँ जवाब दे के. maybe if you want to open your heart out, you can email me, and if it is, अगर तुम अपना दिल हल्का करना चाहती हो वो अलग बात है. maybe you can ping me and I will call you when I have an hour or so free. तुम अपना दिल हल्का कर लेना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. AS, will I meet my love mate in this lifetime? I have never been in a relationship in reality except in my imagination. Oh, that's so sad. Instead of being in a disturbed or difficult relationship, it's better to be single. So maybe God is saving you from pain. एक चीज याद रखना एएस, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी. आप खुद की इज्जत करते हैं तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी. अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाते, शायद इसीलिए आपको कोई ऐसा मिला नहीं जो आपसे प्यार करता है. Oh, you're in luck. Oh, wow. So AS, big happy changes are coming your way. You're going to meet somebody in the next few weeks. Wow. You're lucky. Good. It's okay, Pushpa. इसमें sorry की क्या बात है? Thank you so much. You're welcome, Jyoti. Why do you wait for him to come with you and take you out? तुम जाओ. मेरा हस्बैंड भी मुझे कहीं वेकेशन पे लेके नहीं जाते थे.
मैं बच्चों को लेके अकेले निकल जाती थी। जब बच्चे छोटे छोटे थे मैं खुद ही उनको लेके निकल जाती थी, तुम बैठे रहो करते रहो काम। फिर उसके बाद एक दो बार आई मीन आ गए पीछे पीछे। इट्स ओके, डोंट बॉदर, you live your life and you do what makes you happy. He don't allow you to do that. Meet your friends. I think you need a reading, Jyoti. You need to come to me for a reading. Jaya, Ginni ma'am, I love unconditionally without any expectation, but my parents want me to get married, which I can't even think because of I'm already complete. What to do now, how to make them understand. I don't know why you say that you don't want to get married, but if you really don't want to get married, then um, पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, और उसके बाद इफ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू, यू कैन लीव योर होम एंड यू कैन गो एंड स्टे समवेयर and look after yourself. They can't force you to get married. Nobody can force anybody to get married. हाँ, इमोशनल प्रेशर होता है, जैसे आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे साथ था, पर मैं तो तब 19 साल की थी. I mean, I don't know how old you are, Jaya, but मैं तो बच्ची थी. I was not even financially independent. तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ, और काफी सारी बातें थी, complications थे. But if you are not that young and if you are financially independent, even if you're not, and they're able to support you, I don't see a reason why they should force you to get married, or you should agree. Sanika, I don't have patience, so I said this. Good, I didn't become divorce lawyer, or in a day. Thank you so much. You're welcome, Akanksha. Happy Valentine's Day. Thank you so much, Sanika. Even I love talking to you all. इसीलिए तो आज आ गई मैं गप्पे मारने. Thank you. All right. और कोई question? Hi, Dalia. Namaste. They're not forcing me. I'm financially independent. I love my parents. I'm 26, but I love someone. They are just worried. Okay. Maybe you can take a reading and we'll see how it goes, whether you are meant to get married or not. So 26 is, yeah, it's the right time. If you want to get married, then it's the right time. But if you have somebody in your life, then you should get married. You're welcome, AS. No notification because this was a very impromptu Dalia session. मैंने सोचा कि it's okay. Don't cry. You can still ask me a question. And so I'm doing readings on love and relationships. These are the decks in front of me. If you have a question, Dalia, you can still ask me. Don't worry. Tell me, do you have a question? पार्थ नहीं आया, अमित नहीं आया, अनामिका नहीं आई, शैलजा नहीं आई. लास्ट मिनट इम्प्रॉम्प्टू करो, इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करो. हाय देवशीष, रेड check shirt looks good on you. It's not a shirt, it's a dress. You love Sushant. But you can't not get married because of Sushant, Jaya. You know how many thousands of people love him? बेचारा किस किस से शादी करेगा अगर वापस आ भी गया तो. Don't make it so difficult for him. Thank you, Devashish. Okay. You're welcome. Thank you so much, Dalia. Thank you, Pushpa. Nay, see, sorry to say this, Jaya, but this is not only love. There's a difference between love, obsession, attachment. Even I love him. But that doesn't stop me from living a normal life or loving someone else. I'm not doing about career. I'm only doing about love or relationships. And I think I've done a question. No, one question per person. No more questions. So, Devashish, do you have any question? मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाला था.
और ट्विटर पे भी डाला था। तो बाकी, हाँ, तो अभी मतलब 10-15 मिनट पहले मैंने लिंक डाला था। यस देवशीष, ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन? इट्स ओनली अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स, सो टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? Hello, Devashish. What is your question? My only question is, will I meet my soulmate or girlfriend this year? This year. सबका एक ही question है. Will you meet? Will you meet? So I'll pull out a guidance card from this Angel Answers deck. Thank you so much, Nova. बेचारा सुशांत, और इसके टुकड़े कर दोगे तुम लोग तो उससे शादी करने के लिए। हर एक को उससे शादी करनी है। कोई बेटा बना रहा है, कोई भाई बना रहा है, कोई शादी कर रहा है। ओके, सो somebody will help you, Devashish, in meeting your soulmate. Are you planning to get married or something? Is it going to be an arranged marriage? Okay, so there are certain compromises that you may have to make. So you will meet your soulmate through someone, uh, but she may not be the kind of girl that you probably like or you're attracted to or you would want in your life. There would be certain compromises, and you may need to balance out the differences with love. But yes, there is also a possibility that you may meet her at some wedding or party or engagement or baby's naming ceremony or baby's birth ceremony or something. That's what I feel. No arranged marriage, but you will meet her at some gathering. All right. So I think that's the end of it. वैसे भी मैंने एक ही घंटा करना था. Shows maybe. What shows? No, I think this is more of a celebration. No, I don't think it's a live show or concert. प्रश्न, यह प्यार कब होता है? कब होता है? अभी यहाँ स्ट्रीम यार्ड नहीं है ईश्वर जी, नहीं तो मैं आपको लिंक भेजती आके ज्वाइन करने के लिए। और आपका प्रश्न हम समझते जब राहु केतु और शनि की दशा खराब हो awesome, और मंगल कमजोर हो, भगवान मजे लेने के मूड में हो। I can't stop laughing. Oh my God, I can't stop laughing. सही कहा आपने ईश्वर जी, बिल्कुल सही कहा। प्यार तब होता है जब राहु केतु शनि और मंगल की दृष्टि खराब हो और भगवान मजे लेने के मूड में हो। बिल्कुल सही कहा। Love is only about loving and giving, Jaya. Yes, love is about that, but we are all humans. और कहीं ना कहीं हम सबको मन में एक उम्मीद होती है कि कभी ना कभी प्यार जो है वो रंग लाएगा। प्यार के बदले में और कुछ नहीं तो कम से कम प्यार तो मिलेगा। वफा के बदले में वफा तो मिलेगी। नहीं होता, पता नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है सब रोते ही रहते हैं। Sure, Nova. That's why I fear doing arranged marriage with some bit
Sambij, as just now I can get my political work credit from Modi if I marry them. But what if I don't get along with them? Then what will you do? राजनीति फिल्म देखी है? राजनीति और सरकार, क्या है ना कि हमारे दादा परदादा माँ बाप इन लोगों ने कभी लव मैरिज जनरली नहीं किए, सबके अरेंज मैरिज है, और दे ऑल गॉट along विथ ईच अदर. उस जमाने में डिवोर्स नहीं होते थे, जिंदगी निकल गई. हाँ, उसमें औरत को बहुत सहना पड़ा, सहती आई, और आज औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है. लेकिन इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड समटाइम्स. सो I don't know. It's a choice you have to make, Sanika. It's you have to decide. And शादी से पहले you can always take a relationship analysis or consultation with me. We can see how things will pan out. ईश्वर अंकल, हाँ बहुत टाइम बाद आए हैं ये. गणपति नटराजन, हाय गणपति, थैंक यू. कल्चर ट्रेकर्स, नमस्ते, थैंक यू. अभी उन्होंने जोक ईश्वर जी ने ऐसा मारा कि मैं मुझसे रुका ही नहीं गया. I just couldn't stop laughing. If it is love, it is always true and always unconditional. If it is not true and not unconditional, then it is not love. I love babies and animals. We all do. Why is she crying every day? Why is your dad suffering? Just because you're not getting married? Maybe what you can do is you can ask them to take a numerology consultation for you. And अगर तुम्हारी किस्मत में शादी है और शादी का सुख है तो बता देंगे. अगर शादी का सुख नहीं है तो शादी करके मतलब क्या? और अगर किस्मत में शादी है तो जब लिखी होगी तभी होगी ना, तो रोने का क्या मतलब है? अच्छा ma'am, how to take your consultation in person? I don't do in person anymore. I only do it online. Are you in Bombay, Akanksha? I don't know. I mean, not that I mind, but too many strangers walking in my house and the energy. I prefer to do it online. It's comfortable for you and me, है ना? Call me, WhatsApp me. Prasad Mali, what about extramarital affair and cheating each other? So, Prasad, exactly what is the question? When you say, what about extramarital affair? Are you asking, is that right or wrong? Are you asking, how will your extramarital affair work out? So, exactly what is your question? Yes, sure. You should. It's always good to have guidance. अगर अरेंज मैरिज भी है तो ये है कि हाउ टू गेट along with each other. अगर so generally when I do a relationship analysis, I prefer that the husband and wife are sitting both in front of me. I mean, or even if it's online. And उन दोनों को ये समझाती हूँ कि ये इंसान पैदा ऐसा हुआ है, ये बंदी ऐसे पैदा हुई है, इसको तुम चाह के भी बदल नहीं सकते. और जब कोई इंसान पैदा ही वैसे हुआ है और आप उसे नहीं बदल सकते, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें एक्सेप्ट कर लेना. जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तो उनकी गलतियों को भी करते हो और धीरे धीरे फिर प्यार हो जाता है. तो दैट्स आई थिंक, आई मीन, अगर मैंने न्यूमरोलॉजी शादी से पहले सीखी होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती. They have done arranged marriage, not for me. Okay. Dahlia, Sanika, they care for you. How do you do that? I do it online. I do it on, I used to do it on Microsoft Teams, but then I came to know that it belongs to Bill Gates. So then now I started using Zoom.
trying to find out a better alternative because I wouldn't like to use a Chinese app, but I don't have an option. I am in. Yes, sure, you can take an appointment. Okay. What about extramarital affair, cheating each other? How much does it affect your own karma? ओके, ये दोनों मेरे हाथ हैं. अगर मैं अपना ये हाथ जानबूझ के मशीन में दे दूं तो तकलीफ तो मुझे ही होगी ना. इस हाथ को भी होगी. आज नहीं होगी, कल नहीं होगी. आपको व्हाट सी अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो उसके वाइब्रेशंस, रिपल्स फैलते हैं ना. इसी तरह से व्हेन यू डूइंग समथिंग, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग. अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत ये है, जिंदगी में सही और गलत कुछ नहीं है. जिंदगी में अच्छा और बुरा कुछ नहीं है. जिंदगी में काला और सफेद कुछ नहीं है. लाइफ इज अ शेड ऑफ ग्रे. समटाइम्स इट्स डार्कर, समटाइम्स इट्स लाइटर. जब आप किसी के साथ, आपकी शादी हो चुकी है, आप उसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि आप उसका साथ जिंदगी भर देंगे और उससे वफा करेंगे, उससे प्यार करेंगे. अगर उसके पीठ पीछे आप किसी और के साथ कुछ फिजिकल या प्यार या सेक्स या कुछ भी करते हो, जो आपको पता है कि अगर उसे पता चला तो ये शादी टूट सकती है, तो आप गलत कर रहे हो. क्योंकि आपके अंदर गिल्ट है. अगर आपके अंदर गिल्ट नहीं है, इट डजेंट रियली मैटर. लेकिन अगर जरा सा भी एक सेकंड के लिए और आप झूठ बोल रहे हो, कभी ना कभी सच ना, हमने सुशांत की बारी देख लिया है कि सच ना कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है. और जब वो बाहर आता है तो कहते हैं कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत कड़ी पड़ती है. तो कर्म का, ऐसा मैं समझती हूँ. कल रितेश से जब बात हो रही थी तो रितेश कह रहा था कि कर्म का कोई फल नहीं होता एंड ऑल दैट. आई अग्री. भगवान की डिक्शनरी में नहीं होता, वो नहीं करता, हम खुद करते हैं. हम हाउ डू आई से दिस, कर्म का एक आउटकम होता है. एंड हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अनकॉन्शियस कैसे रिएक्ट करता है हमारे उस कर्म को, उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता है. हो सकता है इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिले. ऐसा कहते हैं. जन्म किसने देखे हैं? आई मीन, अंजुम, यू वर जस्ट आस्किंग अबाउट past life and all. I've seen a lot of my past lives, but I've seen what I've seen. I mean, how do I know that that's not some concoction of my imagination or my subconscious mind, or it is a truth or not? Who knows? Okay. uh, Guidance, will I be able to achieve my higher purpose? Jaya, when I come back in 2-3 days to do another live on those 5 planets being in Capricorn, how it's going to affect all the sun signs, maybe, I'll take all these questions. Today, let's stick to relationships. I think that's better. 51 Shades of Grey. Hate lies, really? Sush brought the awareness, but what are we doing? Culprits still roaming, having fun. Yes, Jaya, but Sush did not just bring awareness about the Bollywood. आप लोग भूल रहे हो कि सुश किसके लिए लड़ रहा था. सुशांत was fighting for human trafficking.
for organ trafficking. And who is doing all this? Why is all this COVID? And I mean, he knew that why this pandemic is here. He knew about everything that Bill Gates and Rockefeller and Queen of England and reptilians and all that we've heard in on my other channels. I mean, he knew about all of that. He wanted to expose it. He probably wanted to expose the Godi media. He probably wanted to expose, Sri Devi wanted to expose it. We all know that. Parveen Babi wanted to expose so many things. That is the reason they were killed. लेकिन हम लोग आज भी, हाँ, सुशांत के लिए जस्टिस जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन वो जिस चीज के लिए लड़ रहा था, हम लोग उस चीज के लिए लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? अगर सुशांत को ट्रिब्यूट देना है, अगर कोई समझता है कि वो मर चुका है तो उसे श्रद्धांजलि देनी है, अगर कोई समझता है कि वो जिंदा है, वापस आना है, तो उसके लिए इतना तो करो कि उन चीजों के लिए लड़ो जिसके लिए सुशांत लड़ रहा था. अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर आप कैसा प्यार है ये सुशांत के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड. सुशांत की वजह से मैं पार्थ से मिली, पार्थ की वजह से मैं विलास जगदाले, डॉक्टर विलास जगदाले से मिली, उनकी वजह से मैं और 1000 लोगों से मिली हूं. मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु have been asking me to take interviews of them and to want to talk after the last session I did with Dr. Vilas Jagdale. बहुत सारे लोगों ने मुझे आध्यात्म के बारे में, असेंशन के बारे में, 5D के बारे में बहुत सारी बातें बताई, वो करना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं लाइव कर रही हूँ, तो उनके साथ प्लान करने में मुझे वक्त लग रहा है, लेकिन वो सबको मैं चैनल पर लेकर आऊंगी. आई मीन, थोड़ी मेरी पर्सनल लाइफ भी, यू नो, आई नीड टू फाइंड टाइम फॉर माई क्लासेस, माई क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग. ये क्या, खुद को समझाने के लिए क्या करना चाहिए? खुद को समझाने के लिए, हाँ, गीता पढ़ना हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन तब अगर आप गीता को समझें. पिछली बार अगर तुम्हें याद होगा आकांक्षा, तो मैंने बताया था कि हमारे जितने वेद पुराण हैं, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, दे आर ऑल सिंबॉलिक. गीता में कृष्ण जो है वो कृष्ण नहीं है, वो यू कैन से दैट ही इज एन एंजल, लेकिन द्रौपदी है, 5 पांडव हैं, कौरव हैं, कृष्ण की 16,000 बीवियां जो है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ हाउ वी नीड टू असेंड. अगर आप 5D में असेंड होना चाहते हो, अगर आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो, तो आपको वो कैसे करना है? क्रिया योग कर सकते हो, सहज योग कर सकते हो. तो अगर आपको अवेयरनेस लानी है, खुद को समझना है, तो पहले अपनी कमी को समझो. आपकी लर्निंग्स क्या है? वो क्या चीज है जिससे आपको दुख होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, नफरत होती है? क्यों होती है? शीशे के सामने खड़े रह के खुद से पूछो क्यों होती है. उसके बाद you need to go back and there's many layers, you know, प्याज की तरह उसे छिलना पड़ता है परत दर परत अपने आप को. तब जाके आप अंदर कोर में पहुंचोगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज पे आपको वर्क करना जरूरी है. आई एम स्टिल डूइंग इट. आई स्टिल, देयर आर थिंग्स दैट, यू नो, आई एम नॉट ओवर. लोग कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं दैट यू आर वेरी ascended and awakened, and I don't think so. There are still so many milestones that I need to cover. बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए सीखना अभी भी बाकी है, मेरी learnings बहुत सारी बाकी हैं. Who is going inside, everyone coming out? ठीक है ना, वक्त आता है सबका. याद है जया, मैंने लास्ट ईयर बोला था अक्टूबर में कि जस्टिस का वक्त शुरू हो गया. जस्टिस ही हो रहा है. Second question, I'm not taking for anyone. One question each. I always do that. I don't give anybody a second question because the others also need to get a chance. 7 deadly sins. Yes. You need to know what's your own weakness. Difference between true love and attraction. जैसा कि मैंने कहा प्रसाद,
अगर ट्रू नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है, तो लव नहीं है। और अट्रैक्शन है तो वो फिल्म देखी है, एक दूजे के लिए। एक दूजे के लिए में माँ बाप कहते हैं इन लोगों को, दोनों को एक दूसरे से 1 साल दूर रखो, ना ये बात करेंगे, ना मिलेंगे, ना एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को भूल जाएंगे। क्या होता है अंत में? क्या भूल जाते हैं वो? प्यार सालों क्या जन्मों नहीं भूलता। आप ना मिले किसी से, 10 साल ना मिले, I mean, you still love that person. You love that person to eternity. That is love. अगर 4 महीने बाद आप कहते हैं कि नहीं अब तो मैं, now I'm in love with someone else, so yeah, that's not love. That's attraction. Attraction is when you just want to get physical, go out, and once you're done and over. Sahajog meditation and foot soaking karo. You people will feel better and relaxed. One more question on Sushant. All believing he is coming back sooner. So will Sushant come back? That question again. Ah, even I don't believe he is. But there are so many. सी अगर वो जिंदा है भी ना, तो अब तक तो उसका क्या इन लोगों ने क्लोन बना दिया होगा, या उसका एक्सपेरिमेंट या क्या कुछ किया होगा, उसको मार दिया होगा या क्या कर दिया होगा, पता नहीं। अगर वो आ भी जाता तो क्या वो इस हालात में होगा कि वो अपने असली चेहरे के साथ लोगों के सामने आ सके? नहीं। सो I face my demons and confront them. I don't feel guilty. I sometimes use it against rude people, or yeah, so do I. Surrender your ego, super ego, in the माँ आदि शक्ति's lotus feet. ईगो ही तो सबसे बड़ा इशू है दुनिया में आज की डेट में. Sanika, you're wrong. Yes, you are right that attraction is only physical. लेकिन I hate that love is wrong, because अगर आप किसी से सच्चे दिल से भी प्यार करते हो, कभी ना कभी, if the love is mutual and between the two of you, at some point, someday, you will want to express that love. And अगर आपने मेरा तंत्रा का जो वीडियो मैंने रॉकी के साथ किया था, अगर आप लोगों ने वो देखा है, तो when two souls connect, at some point they have to connect physically to help each other to rise, ascend, for the kundalini to rise up. So there is nothing wrong with physical love. Nothing absolutely wrong. I mean, it's something God has made. So why is it wrong? God also does that. If you believe in Krishna and Radha and Shiv and Parvati, what is just Shivling? Shivling is Shiva's penis inside Parvati's yoni. So if God has done it and if there's nothing wrong with it and you can do puja of it, then why is physical intimacy wrong? It's not wrong. What is wrong is with what intention it is done. If you're intending only to use somebody, then it is wrong. If you're intending only to, release your heat and using somebody for that, that is wrong. If you're fooling somebody, oh, I love you, and then you're having sex and then, you just disappear, that is wrong. But if two people are in love, then physical intimacy is not wrong. And you should not have that, I hate that kind of love, attitude. I feel that something being badass is necessary to survive. Of course, yes, that's exactly what Ritesh also says. You're welcome, Akanksha. Okay, Sush won't come back. We should empower Sush within. Yes, you remember in one of the lives I had said, for all you know, maybe Sush was the Kalki. Maybe he wants that Kalki to awaken that Kalki within all of us.
याद है मैंने एक लाइव में कहा था. खैर, messages from the spirits here. Anybody wants any other question from anybody who's passed on? Last card. Otherwise, let's end this session. Yes, your Mooladhara. And if you do that, your Mooladhara chakra will go for a toss, and that will affect your finance. So don't do that. Don't do that. Ritu is right. Okay. One last card from Sushant. You're welcome, Seneca. I've been saying this for a long time और मैंने रितेश के साथ एक बार एक सेशन किया भी था, अगर आप लोगों को याद होगा. And Ritesh was highly disappointed because nobody really came out and spoke. So this time I did not do it on StreamYard. आप लोगों को मुझे पता है अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आती है, पर एक बार नीला गोखले के साथ सेशन हुआ था अबाउट फिजिकल अब्यूज एंड वुमेन facing physical abuse and all at work and at home and all. तब तो काफी लोगों ने आके बात की थी. तो रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने में दिक्कत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता. जब आप खुल के बात करते हैं, आप अपनी शक्ल मत दिखाओ, अपना नाम चेंज कर लो. Your late husband Joe. Oh, I'm so sorry. I didn't know your husband had. Okay, I'll pick a card. Your late husband Joe. पुष्पा, द कार्ड इज इन इंग्लिश, तो हिंदी में अनुवाद करना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा और थोड़ा मुश्किल होता है. पर इज इट ओके इफ आई रीड इट इन इंग्लिश? सिद्धार्थ शुक्ला. ओके, फर्स्ट लेट मी रीड फॉर पुष्पा. नहीं, there are many other ways. Look at my videos on chakras. Okay, Pushpa. Human beings spend a huge percentage of life asleep, not just in bed, but the kind where you forget you're a spiritual, immortal being taking on a temporary human form. It's not your fault. Everyone suffers from spiritual amnesia once in a while. As you develop an identity and ego, you begin to see through the eyes of a small self and have less connection to your soul self. You may not recognize this is going on, but you sure can feel it. We are here to remind you to look through your soul's eyes and see that magic is everywhere. Infinite potential lies in spirit, who is teaming with you to fulfill the contract you made to contribute to the evolution of the whole world. Wake up and remember that all the help you need is orchestrated in the invisible realms. Your mind, in alignment with the divine intelligence, is unstoppable. The world is yours to co create. What a beautiful message, Pushpa, that is for you. You are so loved, and we are all behind you. It's a beautiful message. Motivating you. Okay, somebody said Siddharth Shukla. वो सिद्धार्थ शुक्ला. मुझे है दिल दुखता है सिद्धार्थ का नाम आता है तो. सिद्धार्थ, सुशांत, I mean, it's really bad. Yes, I do have a video on Sahaj Yog with Mr. Anurag Sharma. It's on this channel. रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए लम मेडिटेशन करो. सनिका, तुमने देखे हैं मेरे सारे चक्रास के ऊपर जो मैंने वीडियोस किए हैं नील वोरा के साथ एंड ऑल दैट? यू सीन इट. ग्राउंडिंग करो. यस, अभी 20th and 21st and 22nd 3 days I'm going to put up some meditation videos. Make sure you do that. Okay, Siddharth Shukla.
Dearest you, we are a chatty bunch over here, always talking about how to support you in your life's journey. We communicate to you through the language of oracles, dreams, signs, metaphors, and omens. In your life on earth, however, clarity in your communication is essential to being understood. सिद्धार्थ कह रहा है कि वो अपनी तरफ से वो लोग मैसेजेस आप लोगों को भेजते रहते हैं, मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स. अगर आपने मेरा वो देखा है वीडियो उन तरीकों से, तो आपके लिए वो समझना जरूरी है. अगर आप उसे याद करते हो और उस वक्त कोई मैसेज आता है, नंबर्स दिखते हैं, गाना बजता है, कुछ होता है, तो you don't speak in symbols, and if you did, you would definitely confuse things. तो वो कह रहा है कि आप लोग सिंबल्स में, साइंस में या उलझी हुई तरीके से बातें ना करें, क्लियरली बात करें. Right now you're facing a situation in which you're being asked to have integrity. Be clear and learn how to ask for your needs to be met. इस वक्त आपका जो सिचुएशन, जो हम सब जानते हैं 2 साल से जो चल रहा है, और इस वक्त जो इंडिया में चल रहा है, मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो इन मेनी अदर कंट्रीज, सो आपको ईमानदारी से और क्लैरिटी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको जो भी मांगना है, चाहे आपको गवर्नमेंट से मांगना है, ईश्वर से मांगना है, अपनों से मांगना है, या आपको उनके साथ जो जीना है, आपका हक और आपकी आजादी. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एडमिट आउट लाउड दैट यू हैव नीड्स. तो पहला कदम ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी ये जरूरत है. सेकेंड इज टू आस्क आउट लाउड फॉर देम टू बी मेट. दूसरा ये कि उनसे कहो कि आपकी जरूरत है और वो उसे पूरा करें. एंड द थर्ड इज टू अलाउ द अदर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इवन अस टू आंसर यू. फिर वो आप चाहे ईश्वर से मांग रहे हैं, अपने स्पिरिट गाइड से मांग रहे हैं, या गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, दुनिया से, सोसाइटी से, घर वालों से मांग रहे हैं, उनसे जब आप कोई चीज मांगते हैं और सामने वाला आपको देना चाहता है, तो वो लेने के लिए, आपको एक्सेप्ट करने के लिए, यू हैव टू बी ओपन. कई बार जब ईश्वर हमें ब्लेसिंग्स भेजना चाहता है ना, हम उसे ब्लॉक करते हैं, जैसे सनिका कर रही है. सो सनिका, यू आर ब्लॉकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम कमिंग इनटू योर लाइफ. सो जब हम कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस. बैड थिंग्स, bad luck, that knocks repeatedly. So you have to be open. Sometimes you are not open. God sends things, but you don't accept it. When you follow these steps, you can most definitely expect an answer in your favor. Affirmative, we say. Loving you so very much. That's a nice message. Very motivational message. That's really nice. So much needed. आज की डेट में बहुत जरूरी है ये. Okay, so that was the end. So message. Okay, bye Devashish. Yes, sure. Okay, so Sushant से एक message. Okay. Dear you,
The simple yet powerful law of cause and effect means everything is in relationship. कोई मुझे कर्म के बारे में पूछ रहा था, सही और गलत के बारे में पूछ रहा था, कर्म के नतीजों के बारे में पूछ रहा था. तो हर चीज जुड़ी हुई है और हर चीज के बीच में एक रिश्ता होता है. Every action on earth has a consequence, and even in the spirit world, there is a consequence for every action taken on your behalf. I love the way Sushant gives messages every single time. His message has been so for the moment now. Right. Right now, you're facing conditions that were set in motion by past decisions. Consequences are coming into being in your favor. That's nice. They will remind you that making good choices and listening to your intuition pays off. If some things are a little off and uncertain, know that whatever you are facing, you can step beyond it. तो जो कुछ भी आज हो रहा है, चाहे वो हमारे आसपास हो रहा हो, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा हो या हमारी पर्सनल जिंदगी में हो रहा हो, वो आज इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ऐसे कर्म हुए थे जिसका ये नतीजा है, और आज जो हो रहा है उसका नतीजा आगे जाके होगा. तो वो कह रहा है कि जो होने वाला है वो आपके भले के लिए होने वाला है, और आपका काम यह है कि आप सही फैसला लें और सही कर्म करें. अपनी इंट्यूशन और इमेजिनेशन को यूज करें. विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन आई ऑलवेज सेड आर वेरी पावरफुल टूल्स to manifest what it is that you want. Everything you think and do has far-reaching reverberations in the web of life. Everything you think and do has far-reaching reverberations in the web of life. Move to higher ground and have faith that what goes around comes around. अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि सब लोग बाहर हैं, अंदर कोई जा नहीं रहा, जस्टिस नहीं हो रही सुशांत के लिए. यही कह रहे थे ना अभी आप? The universe, what goes around comes around. The universe is always self-correcting anyways. Isn't that amazing? He amazes me every single time. How we adore you. He adores you, he says. So that was Sushant. Thank you so much, everyone. Yes, great message. No, Sanika, we will talk about it. Maybe we'll talk about it someday. Okay. So goodbye and good night. I hope you all had a great Valentine's. You made my day. So I had a great Valentine's. Bye. Good night.